students, welcome back to your channel GK Student Corner. Today we will discuss about double displacement reaction बा द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया है ना नहीं। आगर आम कौन सब पढ़ीचे ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ीचे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ीचे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ीचे। आज ताले आम कौन पढ़ा ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तेणुक आम जो केमिकल रिएक्शन चैप्टर बर्तमान कंटिन्यू करूचे मु कौन करी ना ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को गोटे प्ले लिस्ट रे रखी। जो मैंने यही चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ा चाहिए आमर जो शॉर्ट वीडियो आम सब बर्तमान करूचे, गोटे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करूचे, गोटे कॉम्बिनेशन रिएक्शन करूचे, गोटे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर देचे। आज कौन करबा ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी करबा। ता कौन हबो ना सेही प्ले लिस्ट रे गोटे गोटे शॉर्ट्स वीडियो रहइबो। ता द्वारा हम जतले इच्छा हबो जो रिएक्शन को देखिया पे ताकू आराम रे पढ़ी परिबा एवं तार क्वेश्चन आंसर करि परिबा ताकू बुझी परिबा है ना नहीं। चलंतु आज हम कौन पढ़िबा ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ताले तार डेफिनेशन कौन रही जो द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया ना जो रासायनिक प्रतिक्रिया कौन हुए ना जो रासायनिक प्रतिक्रिया प्रतिकारक द्वय मध्य आयन विनिमय घटी है सही रासायनिक प्रतिक्रिया को द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया कहा जाए। कौन हुए ना प्रतिकारक द्वय मध्य आयन विनिमय घटी है ना नहीं। सेटा हमें आगु को डिस्कस करबा ये जो केमिति आयन विनिमय घटी है। ताले कौन ना इंग्लिश रे ताको कौन कहते डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रा डेफिनेशन को ना ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन in which positive and negative ions exchange their places to form two new compounds. Okay, positive and negative ions of the ionic compounds exchange their places to form two new compounds is called your double displacement reaction. Okay, चलंतु बर्तमान आम कौन ना तार जनरल फॉर्म देखिबा कहार ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रो जनरल फॉर्म ऑफ ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, आल्सो कॉल्ड डबल रिप्लेसमेंट। ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, ताले कोन ना ता जनरल फॉर्म कोन हबो ना वर्तमान कोन है ना ये ए बी गोटे आयनिक कंपाउंड है ना नहीं। आम जो डेफिनेशन रही कौन है ना double displacement reaction will takes place among two ionic compounds. Okay, that means AB is a ionic compound, CD is another ionic compound. Yes or no? That means in these two ionic compounds the positive and negative ions exchange their places है ना नहीं, exchange their places and form two new compounds. ताले कौन है ना ए बी रे कौन है ना ए प्लस आउ बी माइनस ये आयनिक कंपाउंड एमिट था आउ सी डी रे केमिति था ना सी प्लस आउ डी माइनस है ना नहीं। ताले देखो ए प्लस बी माइनस आयनिक कंपाउंड ए मिली और था। हमें आगु को जो केमिकल बॉन्डिंग सब पढ़िबा तादरे हमर सब क्लियर हवा कि वर्तमान में जो आयनिक बॉन्ड थाए ताले कौन हुए ना ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी माइनस ए मिली भावर थाए। ताले कौन हुए ना एथुरु देखो ए प्लस आउ डी माइनस देखो ए आउ डी ये आउ ये डी ताले ए प्लस आउ डी माइनस ताले ये दीटा कौन हले ना मिसी जाके कौन हबो ना हमको ए डी मिल जिवो है ना नहीं। सिमिलरली सी एथु जे पॉजिटिव बी होची नेगेटिव ताले ए दीटा मिसी जाके हमको कौन मिलबो ना सी बी बा बी सी एक नुआ कंपाउंड मिलिबो। तामेन कौन हला जो जनरल फॉर्मूला कौन हला ना व्हेन वी टेक टू आयनिक कंपाउंड्स these two ionic compounds exchange their ions positive and negative ions to form two new compounds. Okay, this is the general form of a double displacement reaction. ताले कौन होची ना देखो ए होची ए बी गोटे कंपाउंड सी डी होची गोटे कंपाउंड ए दीटा कौन ना रिएक्टेंट्स ताले हमर प्रोडक्ट कौन होची ना ए डी आउ सी बी एटा होची कौन ना प्रोडक्ट। ताले दिस इज द general form of double displacement reaction. Okay, this is the general form of double displacement reaction. बुझी पारले पता ना आगु बुझबा हमें कोन ना एग्जांपल नबा बर्ताने
बर्तमान डबल डिस्प्लेसमेंट बा द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया आम किसी एग्जांपल बर्तमान नबा एवं ताकू बुझापे चेष्टा करवा हाँ ना नहीं ताले कौन है ना सिल्वर नाइट्रेट रो जलीय द्रवण को सिल्वर नाइट्रेट रो जलीय द्रवण को सोडियम क्लोराइड रो जलीय द्रवण सह प्रतिक्रिया कराइले कौन हेबो हाँ ना नहीं ये हूँ कौन ना सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट रो जलीय द्रवण AQ मतलब कौन AQ माने कौन ना एक्वस सॉल्यूशन ताकू कह जाए जलीय द्रवण को आम सब बेले केमती लिखे ना AQ एक्वस सॉल्यूशन को AQ लिखा जाए ताले ये हूँ कौन ना सिल्वर नाइट्रेट रो जलीय द्रवण को सोडियम क्लोराइड रो जलीय द्रवण सहित कौन करले ना आम जदि प्रतिक्रिया कराइबा ताले हमको कौन मिलबो ना AgCl मिलबो सिल्वर क्लोराइड ओके आउ सोडियम नाइट्रेट मिलबो है नहीं when aqueous solution of silver nitrate will react with aqueous solution of sodium chloride you will get silver chloride precipitate okay the precipitate symbol is written like this upward downward arrow is written for precipitate okay silver chloride you will get silver chloride solid and sodium nitrate aqueous solution of sodium nitrate okay aqueous solution of sodium nitrate that means when silver nitrate aqueous solution of silver nitrate will react with aqueous solution of sodium chloride you will get the precipitate of silver chloride and aqueous solution of sodium nitrate okay this is the one example of डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बा द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया रो यह होची गोटे एग्जांपल तादरे कोन हुए एथरे ना आयन विनिमय घटे केमिति आयन विनिमय घटला देखो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को हम केमिति लिखि परिबा ना Ag एठी होची Ag प्लस आ ये NO3 माइनस जेहेतु कोन हेची ना सिल्वर नाइट्रेट कोन गोटे आयनिक कंपाउंड ताले से कोन ना Ag प्लस NO3 माइनस आकार थाए आ एठी कोन हुएला ना प्लस हैला सोडियम क्लोराइड Na प्लस आ Cl माइनस ये दुटा भीतर जेतले रिएक्शन हैला देखो एठी होची Na प्लस एठी होची Cl माइनस ताले कोन हबो ना पॉजिटिव नेगेटिव सहित कोन हबो ना जोड़ी होई कि गोटे कंपाउंड बनबो है नहीं गोटे कंपाउंड तैयारी हबो नुवा कंपाउंड ताले एठी देखो ये पॉजिटिव सहित हमर कोन हैला देखिबा बताने देखो Ag सहित के मिसिला जाय कि Cl है ना नहीं Ag कौन मिसला ना Cl सहित मिसला Ag प्लस और Cl माइनस है नहीं तापर आउ कोन ना के मिसला ना ये आ सहित मिसला है ना नहीं के ना NO3 और Na सहित मिसला ये होची पॉजिटिव ये होची नेगेटिव हम कौन मिलला ना NaNO3 मिलला और AgCl मिलला है ना दीटा को आयनिक कंपाउंड when two ionic compounds react they exchange their ions in this case silver nitrate and sodium chloride exchange their ions positive ions and negative ions and form two new compounds that is your silver chloride and sodium nitrate this is one example of double displacement reaction are you clear बर्तमान हम सेकंड एग्जांपल गोटे देखा कौन ना बेरियम क्लोराइड रो जलीय द्रवण को लघु गंधक अम्ल सह प्रतिक्रिया घटाइले लघु गंधक अम्ल सहित प्रतिक्रिया कराइले है ना नहीं तार लघु गंधक अम्ल कौन ना सल्फ्यूरिक एसिड है ना नहीं तार बेरियम क्लोराइड कौन ना BaCl2 ये हमरा BaCl2 और H2SO4 आ भीतर जेतला हमें रिएक्शन करबा कौन ना when barium chloride aqueous solution of barium chloride react with aqueous solution of sulfuric acid you will get barium sulfate solid that means precipitate of barium sulfate and aqueous solution of hydrochloric acid you will get two new compound that is your precipitate of barium sulfate and aqueous solution of hydrochloric acid okay in this case you take suppose barium chloride and sulfuric acid okay these are two ionic compounds yes or no that means barium chloride is like this Ba2 plus here है ना नहीं और Cl minus है ना नहीं H2SO4 H plus SO4 2 minus है ना नहीं
देखो SO4 2 माइनस ये Ba2 प्लस है ना नहीं ताले ये 2 प्लस ये 2 माइनस ताले कौन है ना बेरियम सल्फेट हो गला टी न्यू कंपाउंड योर न्यू कंपाउंड इज बेरियम सल्फेट it is precipitated that means barium sulfate is insoluble solid okay so it is called as precipitate okay आउ कोन हमको मिलुची ना HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ओके हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलुची as new compound okay that means in this case when two ionic compounds barium chloride and dilute sulfuric acid will react you will get two new compound that is your barium sulfate and hydrochloric acid okay are you clear that means in this case also we are taking two ionic compounds and two new compounds are formed okay in these two ionic compounds they exchange their positive and negative ions and you will get two new compound are you clear this is also an example of double displacement reaction बा द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया तार होची आमे बर्तन कोन ना दुटा एग्जांपल देखले हना नहीं यस आगु को जिबा बर्तन कोन ना आउ किछ एग्जांपल देखिबा बर्तन कोन ना एग्जांपल 3 हम कोन नेजे देखो सोडियम सल्फाइड आउ HCl when aqueous solution this is also aqueous all are aqueous AQ aqueous this is your AQ है ना नहीं when aqueous solution of sodium sulfide will react with the aqueous solution of hydrochloric acid you will get sodium chloride this is your sodium chloride this is your H2S hydrogen sulfide gas this is your hydrogen sulfide gas this is gas okay hydrogen sulfide gas and this is your sodium chloride okay this is your sodium chloride this is also an example of double displacement reaction okay example 4 similarly this is a very popular reaction okay this reaction is also given in your book okay that means lead nitrate in this case when aqueous solution of lead nitrate will react with aqueous solution of potassium iodide Ki you will get two new compound that is your lead iodide okay and KNO3 potassium nitrate okay potassium nitrate okay you see lead iodide is yellow precipitate okay the color of lead iodide is yellow okay in this case PbNO3 this is your colorless substance colorless ionic compound Ki also colorless when you will take these two colorless ionic compound after the reaction you will get the yellow precipitate of lead iodide and potassium nitrate okay potassium nitrate are you clear this is also an example of double displacement reaction बा द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया रो यहा मध्ये एक एग्जांपल सिमिलरली आमे आ गोटे एग्जांपल नबा कोन ना AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सिमिलरली you can take the aqueous solution of silver nitrate when aqueous solution of silver nitrate will react with aqueous solution of potassium chloride you will get the precipitate of silver chloride and potassium nitrate aqueous solution of potassium nitrate this is also an example of double displacement reaction बा द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया ताहले कोन हला हम एठी पांचटी एग्जांपल बर्तन देखिले कहार ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रो ये जो हमें सब रिएक्टेंट सब जो हमें नैचे दिस रिएक्टेंट्स इन ऑल द केसेस इन ऑल द एग्जांपल्स वी आर टेकिंग reactant as ionic compounds that means double displacement reaction will takes place among ionic compounds okay among ionic compounds okay in this sodium sulfide and HCl ionic compounds lead nitrate and Ki these are also ionic compounds AgNO3 and KCl these are also ionic compounds that means in double displacement reaction it will takes place among two ionic compounds and these ionic compounds exchange their positive and negative ions and you will get two new compound okay you will get two new compound
Are you clear? In a double displacement reaction, one of the product is either a precipitate, a gas, or a molecular compound. Okay, are you clear? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ଏବେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ବନଉଛି ବୋଥ୍ CBSE ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନଉଛି। ତେଣୁକରି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ରିଆକ୍ସନ୍ ସବୁ ମୁଁ ଲେଖିଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ କୌଣସି ଡେଫିନେସନ୍ ବି ଇଂଲିଶରେ ଯଦି ରହିପାରିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ହୁଏ ନା ପ୍ରଡକ୍ଟ ସାଇଡରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ମିଳେ ଆମକୁ ନା ଅବକ୍ଷେପ ବା ପ୍ରେସିପିଟେଟ୍ ମିଳେ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଆଉ କ'ଣ ମିଳେ ନା ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅର୍ ଏ ମଲିକୁଲାର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମିଳେ। କୋଉ କୋଉ केस रे कौन मिले हमको कौन ना गैस मिले आ को केस रे हमको कौन ना मॉलिक्यूलर कंपाउंड मिले। देखो इन दिस केस इट बी H2S है ना नहीं, और अलग केस रे भी हमको कौन मिले ना गैस भी मिले आ को कंपाउंड कौन मिले ना हमको मॉलिक्यूलर कंपाउंड मिले। आ ताहले डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होची बोली हमें केमिति जानिबा ना प्रोडक्ट साइड रे हमको प्रेसिपिटेट प्रोडक्ट हिसाब रे मिलुथिबो, गैस मिलुथिबो एवं कौन कंपाउंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड मिलुथिबो। आगो को जिबा कोन ना किछि क्वेश्चन आंसर करबा कहार ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और हमर जो एग्जाम रे सब क्वेश्चन पचारा जाउछि तार किछि क्वेश्चन आंसर करबा। कोन करबा ना प्रथम क्वेश्चन कोन हेछि इन ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर यूजुअली द रिएक्टेंट्स। ता माने कोन आयोनिक कंपाउंड्स। ओके, you have already known it. The reactants in reactant side we always take ionic compounds. Okay, the answer will be your ionic compounds. Are you clear? In a double displacement reaction, one of three possible types of products usually form. What are the three types? Okay, the answer is precipitate, gas or molecular compound. The next reaction is अवक्षेप प्रतिक्रिया काहाकू कहंती, है ना नहीं? अवक्षेप प्रतिक्रिया काहाकू कहंती जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे अवक्षेप उत्पन्न हुए ताहाकू अवक्षेपण प्रतिक्रिया कहा जाए। जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे अद्रव्य अवक्षेपण बा प्रेसिपिटेट उत्पन्न हुए ताहाकू अवक्षेपण प्रतिक्रिया कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवर्ड एवं डाउनवर्ड तीर चिन्ह कौन दर्शाए? अपवर्ड एवं डाउनवर्ड तीर चिन्ह कौन दर्शाए? ताले उत्तर कौन हबो ना अपवर्ड तीर चिन्ह रासायनिक प्रतिक्रिया रे गैस उत्पन्न को दर्शाई थाए एवं डाउनवर्ड तीर चिन्ह रासायनिक प्रतिक्रिया रे अवक्षेपण बा प्रेसिपिटेट उत्पन्न को दर्शाई थाए। केमिकल रिएक्शन देखो गोटे हो अपवर्ड आरो आ गोटे हो डाउनवर्ड आरो। अपवर्ड आरो हमर कोन ना गैस ऊपर को सबले जाए माने निकाले एटा हो गैस, है ना नहीं? अपवर्ड आरो हम सबले कोन हुए ना काहाकू ना गैस उत्पन्न को दर्शाए आउ अवक्षेप को कौन दर्शाए ना डाउनवर्ड आरो, है ना नहीं? अवक्षेप जेते कोठी गोटे कंपाउंड देथिबो कोन ना डाउनवर्ड आरो ता साइड रे पीपीटी नले तो हमें पीपीटी भी लिखि परिबा। और को जगह कोन ना पीपीटी लिखा होने पीपीटी माने कोन ना प्रेसिपिटेट आउ को जगह कोन ता ना डाउनवर्ड आरो थाए सेतुरु हमको कोन मिले ना एटा होची प्रेसिपिटेट। ओके, प्रेसिपिटेट न लेके हमें कोन ना डाउनवर्ड आरो यदि देई दबा ताले सेटा कोन दर्शाइबो प्रेसिपिटेट। आर यू क्लियर? बैलेंस करा जाए एटा होची मोस्ट इंपोर्टेंट। एटा होची जो माने जानि छथि निश्चित भारे करि परिबे, है नहीं? केमिति बैलेंस करा जाए, है ना नहीं? तापर होची एटा पर क्वेश्चन भी आसे केमिति बैलेंस करबा पई पड़े। नेक्स्ट होची व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस? राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शंस। ओके, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन काहा को कह जाए
आउ तार equations of these equations. Okay, write down the equations of these reactions. ताला कहा को जाए भला भार आम लिखिपर क्या डिस्प्लेसमेंट और क्या डबल डिस्प्लेसमेंट कह जाऊँगी है नहीं तापर व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक्सप्लेन गिविंग एन एग्जांपल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या कहते हैं गोटे एग्जांपल नहीं आम आराम कर परिबा है नहीं इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन हुए ना ये मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस ए रिएक्टिव लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन ओके हम जानि भला भार आम लिखिपर एटा मैं डिस्कशन करनी बतन एटा जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन हुए आगु लिखा आउ एग्जांपल भी तार दबा है ना राइट द इक्वेशन ऑफ दिस होची इक्वेशन एटा गोटे कारण ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रो एटा होची डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रो गोटे एग्जांपल एमती हमें देखि परिबा है ना नहीं तापर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का कहछि ना सेही जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन सेम बट we can write it as in a reaction in a chemical reaction when a precipitate is formed it is called as precipitation reaction okay insoluble precipitate okay insoluble solid as precipitate okay when in a chemical reaction in double it is also a double displacement reaction in a double displacement reaction a insoluble precipitate will formed so it is called as precipitation. All precipitate reactions are double displacement reaction but all double displacement reaction are not precipitate reaction. produce precipitate can be called a precipitation reaction eta hoche amara patan ta definition kono na any reaction that produces okay tal patan precipitation reaction kaha ku kah jaye na any reaction that produces a precipitate is called as a precipitation reaction okay precipitation reactions produce insoluble salts which settle down as precipitate which settle down okay which settle down as precipitate okay in precipitate reaction an insoluble salt which settle down as precipitate okay next question when you have mixed the solution of lead nitrate with potassium iodide what was the color of the precipitate formed and can you name the precipitate second part what is the balanced chemical equation for this reaction okay write down the balanced chemical equation for this reaction. I have already discussed this you can do it easily okay next question is the following equation represents double displacement reaction what is the precipitate formed in this reaction silver nitrate react with sodium iodide gives silver iodide plus sodium nitrate okay in this reaction silver iodide is the precipitate. Students, today we discussed about double displacement reaction. In the next class we will discuss about oxidation and reduction reaction जारण एवं विजारण प्रतिक्रिया. I hope today you have already understood this topic double displacement reaction. Okay, in the next video we will meet. Till then, take care. Bye.